So this is the question number 16 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic user defined functions in Python. So in this particular question, a function header has been given to you and it has been asked which of the following function calls will give us an error. So in order to answer this one, let's see option by option and try to figure out which will give us the right output and which will give us the incorrect output. Okay. So when you call function calc 15 with values 15 and 25, तो इस केस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ 15 विल बी मैप टू x. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी फ्रॉम 20 टू 25. दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन पाइथन. तो इस केस में क्या होगा आपका जो y की वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट क्या है आपकी 20, बट सिंस यू पास द वैल्यू ऑफ 25 इन कैलसी फंक्शन, तो उस केस में क्या होगा? बेस्ड ऑन द पोजीशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 25. इन दिस केस इट इज फंक्शन हैज बीन कॉल्ड विद द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. मतलब क्या हुआ कि आपने वैल्यू क्या करी? रादर देन बीइंग पोजीशन आपने क्या करा? स्पेसिफाइड कर दी कि बेस्ड ऑन द जो कीवर्ड है आपके, यानी जो वेरिएबल्स के नाम से ही आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया. इस केस में क्या होगा? x की वैल्यू विल 15 एंड y की वैल्यू विल बी 25. दिस इज आल्सो ए करेक्ट फंक्शन कॉल. नाउ इन दिस केस व्हाट यू हैव डन, यू हैव कॉल्ड y इक्वल्स टू 25. अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की हेल्प से क्या होगा कि x की वैल्यू तो कोई डिफाइन नहीं हुई, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी फ्रॉम 20 टू 25. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने x की वैल्यू पास नहीं करी. उस केस में क्या होगा? इट विल गिव यू एरर. एरर क्या रहेगा कि आपका कि जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है कैलसी, इट वाज सपोज टू रिसीव टू पैरामीटर्स बट इट रिसीव्ड ओनली वन पैरामीटर. ओके. नाउ इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर डी, व्हाट विल हैपन? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैप हो जाएगी 15 से एंड y की वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट 20 है, तो फंक्शन विल रन. तो इस केस में एरर नहीं आएगा. I hope you got the idea. So for this question, option number C is the correct one because this function call will give you the error. So based on the data or content we have received in this video, I want you to answer this one in the comment box कि which one of the following option is the correct one regarding this particular question. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.